ओके, तो यहाँ पे मेरे पास सीरियल की है और एक है, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने लाइसेंस है। द लाइसेंस नंबर लाइसेंस इज 2, इसमें 2 लाइसेंस है। क्वांटिटी ऑफ लाइसेंस इज 2, नंबर ऑफ इंस्टॉल लाइसेंस इज 2। लाइसेंस का जो क्वांटिटी है वो एक ही है, लेकिन नंबर ऑफ इंस्टॉल कितना है, 2 इंस्टॉल। 2 इंस्टॉल पे हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक्टिवेशन कोड इज डिफरेंट, यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवेशन कोड इज डिफरेंट। यहाँ पे RLD, दिस इज लॉजिक डिजाइनर। RLD मीन्स रॉकवेल लॉजिक डिजाइनर। तो ये इंडिकेट करता है आपका रॉकवेल लॉजिक डिजाइनर एंड उसका कैटलॉग नंबर। देन डिस्क्रिप्शन, स्टूडियो 5000 प्रोफेशनल। इसका डिस्क्रिप्शन जो है स्टूडियो 5000 प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल एडिशन में आपको सभी चीज़ें मिलती है जो स्टैंडर्ड लाइसेंस में नहीं होती है। स्टैंडर्ड लाइसेंस में जैसे कि द स्ट्रक्चर टेक्स्ट इज नॉट देयर एंड वन थिंग, SFC इज नॉट देयर। SFC भी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा एंड सिक्योरिटी फीचर्स इज ऑल्सो नॉट देयर फॉर द स्टैंडर्ड लाइसेंस। But for the professional license, all the activity, all the it is a full fledged license and the version is 33.00.02. Again, right now you have 32.0.00. I think 02 or 32.02, right? I think. And the serial number for this license is this and the product key is this. अभी इसका भी एक्सपायरी 1 मंथ का ही है, ये 26 को आपका एक्सपायर हो जाएगा। देन डाउनलोड एक्टिवेशन, फैक्ट्री टॉक एक्टिवेशन मैनेजर, इसमें भी सेम प्रोसीजर है। तो अभी आप कितने 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के लिए 6 लाइसेंस है। इसमें 5 लाइसेंस है STE के, तो ये 5 लाइसेंस हम आपकी इसमें डाल देंगे। देन इसमें भी 4 लाइसेंस है, पहले 2 और ये 4, 6 लाइसेंस। अभी वी हैव 6 लाइसेंस। देन वी कैन स्टार्ट द एक्टिवेशन प्रोसेस। जिसका नहीं चल रहा है दोज कैन शेयर द स्क्रीन एंड गिव मी द कंट्रोल। कौन शेयर करता पहले? ओके, ओके। यहाँ पे मैनेज एक्टिवेशन में क्लिक करो, क्लिक ऑन न्यू एक्टिवेशन। Then I will just open my sheet and I will see the code. अभी यहाँ पे थोड़ा सा जूम करो, नहीं हो रहा है? ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या डालना है, सीरियल नंबर। जो मेरा लाइसेंस का सीरियल नंबर था वो मुझे यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर डालता हूँ। गिव मी द कंट्रोल। ओके, जस्ट एंटर 2529 K 21295 212, हाँ 21295 and then product key NBG, NB, B for Bombay, G Q Q Q3 dash RAT dash RAT 7Q, हाँ RAT 7Q, yes 7Q. Then
here you see there is a validation activation button in the bottom. Click on validation. It will check the license is valid or not. Now your license is valid, right? अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है. It's click here the product version, yeah, click it. Okay, there is only one version of this catalog number. इसमें एक ही वर्जन है. देन अभी बाइंडिंग इज ऑन दिस कंप्यूटर, तो आपका इस सेम कंप्यूटर पे ही ये लाइसेंस चलेगा. द बाइंडिंग इज ऑन सेम कंप्यूटर एंड यू कैन सी द सीरियल नंबर इज हियर एंड लाइसेंस टाइप इज कॉन्करेंट एंड अवेलेबल लाइसेंस इज 1. यहाँ पे आपको अवेलेबल लाइसेंस दिख रहा है, सेकंड कॉलम 1 एंड टू डाउनलोड इज 1. अभी डाउनलोड भी कितना करना है, हमें एक ही करना है. ओके, देन इन द बॉटम you see the download activation. Click on it, download activation. Yes, नहीं इसमें एक ही है, अभी जो डाला उसमें एक ही है, बाकी लोगों के लिए या हियर अभी क्या हो गया आपका एक्टिवेशन इज बाइंडिंग इज डन. बाइंडिंग हो गया है, यूर एक्टिवेशन. नाउ दिस सीरियल की नेवर वर्क्स अगेन. अभी ये सीरियल की आपका बाद में वर्क नहीं करेगा. इट्स इज वन टाइम एक्टिविटी. ओके, जब भी अगर आपका लाइसेंस डिलीट भी हो गया फिर भी आप कोड मीटर से उसको वापस एक्टिवेट कर सकते हो. जो कि आपने डाउनलोड एक्टिवेशन इसी पीसी के थ्रू एक्टिवेशन मैनेजर के थ्रू डाउनलोड किया है, और ये बाइंडिंग नंबर आपका ऑटोमेटिकली कोड मीटर पे जाता है और ऑटोमेटिकली ये इसी पीसी पे एक्टिवेट कर सकते हो बाद में. ओके, ये एक फर्स्ट एक्टिवेशन आपका हो गया. देन गेट न्यू एक्ट, क्लिक ऑन द गेट न्यू एक्टिवेशन. क्लिक ऑन गेट न्यू एक्टिवेशन. हियर अभी आपका किसका हुआ है, FTV का हुआ है, राइट, FTV. देन दूसरा लाइसेंस है मेरा, नंबर वहाँ पे सीरियल नंबर डालो 2022 K for kite, yes, 3695 6 3695 6. Okay, then product key TL T for tiger, TL EJ X dash HDV DV 94 HDV 94 D for dog. Okay, then check the license is valid or not. Okay, license is valid. Here you can see the available is 2 but you want to download only 1. Okay, इस पैकेज में 2 लाइसेंस है लेकिन मुझे इस पीसी के लिए एक ही डाउनलोड करना है और एक जो है वो दूसरे पीसी के लिए. तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट वर्जन पे क्लिक करो. क्लिक ऑन द प्रोडक्ट वर्जन, या the 33.00.02 and you see the binding is on this computer. तो सेम कंप्यूटर में मुझे बाइंड करना है. देन क्लिक ऑन द डाउनलोड एक्टिवेशन. Okay, you see the binding number is there. Okay, and now you can see the here find available. Click on the find available activation. Here left tab is first one. Okay, refresh.
in the bottom you can see the refresh button in the bottom left side, refresh button. Yeah, there's two activation is available. One is you can see the total number of activation, the product number, and in right side the version. And here is the expiry date. You can see the 27 is the expiry date. Before on the 27 it will expire. Okay, then the next one, next किसका है वो शेयर कर सकता है.